Health Education Lecture Series. Welcome to my show, Health Education Lecture Series. I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. And you are listening me on phone number Sabrang radio station, YouTube, and Facebook media. My clinic address is 7021 Village Parkway, Dublin, California, 94568. Phone number is 408-687-1899. Email address is 7021 Village Parkway, Dublin, California, 94568. Phone number once again 408-687-1899. I am here to deliver another lecture of Health Education Lecture Series. As you know, this is a series of life created from life. How the life is created from life. And this is concerned with our life, with our body. That's why it's more important than any other factor, any other thing in the world concerning to our own life. And in this series, I will let you know about since beginning, from man and female, how this life is created. And since many months, we are delivering these lectures continuously, systematically. And what are the hurdles during these phases, during the development of life, from life, means from man and female, how this life is created. And since then, we have started this lecture series. We are giving you step by step information about that one, so that every concerned person, basically concerned person, they are more interested in that. I am getting the calls from all the peoples who are really interested in knowing how the life is created, how we were born, and how our life was started in the beginning, and even our kids, how they started life in the mother's womb, and what was the you can say the part of the male he played, what was the part of the female they played. So ultimately, we have already covered all these lectures regularly in many months, and we have reached into the uterus, that the fertilized ovum after 21st day of the fertilization. uh, this fertilized ovum has reached into the uterus, and after that about 2 days, within 2 days means 23 days. And I can again remind you that all these calculations, when I say 21 days, when I say 23 days, when I say 14 days, all these calculations are done basically from the first day of last menstruations. Though yesterday I have told you that the first 2 weeks of the female's life, not at that time there is a man's no purpose of the man, but in the female's life, first 2 weeks, again, first 2 weeks are considered from the first day of last menstruations, when she last menstruated. We will calculate that. Though at that time she was not pregnant, at that time she does not know whether the pregnancy will occur or not. At that time she does not know the child will be male or female. Nothing she knows about that. And I'm talking about those women who are married and are having regular and normal sex life. So they are more concerned, they are more interested in that a lady becomes complete when she gives birth to a child. This is what we meant in our society, that a lady is becomes perfect and complete when she gives birth to a child, becomes a mother.
That's important factors. So in this way, every lady after getting married is interested in that as far as possible, as soon as possible, she should get pregnant and should have a title of mother. So that's why on these lectures I have stressed you time and again and repeatedly that after the first 14 days, after the first 14 days, mother does not know, but there are activities in the ovary, activities in the uterus of the mother, which is regularly going on in a process, whether or not the pregnancy occurs or not. If the pregnancy occurs, all the progresses done in these 2 weeks are considered a part of the pregnancy. But if the pregnancy does not occur, if there is no pregnancy under any circumstances, then these 2 weeks progress in the ovary and in the uterus is not considered viable. It not considered fertile, is of no use. But no, it is of use. It is of use because after one or and the other activities happening into the ovary, just like I told you, the when the menstruation starts, after that the new cycle starts, and in the new cycle starts, and there is different eruptions of the new hormones that I told you about, the follicular stimulating hormone. And the follicular stimulating hormone after the menstruations means ovulation has occurred, ovulation has gone to its destination and to its fate, that it did not get pregnant, but after that there is a menstruations. So we are starting from that very point, that after the bleeding of the menstruations, the first of all I told you that there is a different chain of hormones which start occurring. The first hormone which comes up after the menstruation is known as follicular stimulating hormone. And after that, when the follicular stimulating hormones does its sufficient work in the ovary, it produces oocytes from the germinal epithelium of the ovary. In the uterus, it repairs the inner lining of the membrane, which was gone wasted with the bleedings of the menstruations. So, in both way, a repair of the ovary and a restart of the new functions to start the ovulations, to form the ova, and in the uterus to repair, not repair basically, to rebuild the inner lining of the, you can say, the uterus, so that uh, it is awaited that the next month the pregnancy may occur, and we have to prepare for that. The uterus never denied, uterus never becomes sad that if this month pregnancy has not occurred, I should not start this process again and again. No, it has to. The same way in the ovary, even if the ovum has gone out every menstrual nices, every menstrual cycle, and after that the ovary starts refunctioning to start to formation of the ovum in the ovary. And that I have already told you, that after 2 weeks a chain of hormones represents itself in the female genetic systems and develops the ovum from the germinal epithelium to oocyte, from oocyte to the ovulations. So this is the process which is going on within the first 2 weeks. And in the uterus, the formation of the new inner linings of the membrane of the uterus, so that if there be a pregnancy, I should be prepared to welcome that. So in this way, these two progresses in the uterus and the ovaries are necessary
for the pregnancy, but if there is no pregnancy, then they go on wasted, and the new cycle again starts. So, but in our last lecture, because we have already advanced, this is what the basic thing I have told you, that in first 2 weeks the lady is not pregnant, and even she does not know about that. And now there is a uh, regular sexual life, but even then there is no pregnancy. So ultimately we have advanced these lectures that the fertilized ovum has been reached into the uterus after 21 days. What were the hurdles in the way of this one? He has passed from the ovary to the fallopian tube, from the fallopian tube to the uterus. It has taken 1 week period from ovary to fallopian tubes, and via fallopian tubes, you can say it's a via fallopian tubes, because the tube, it does not stay over there, via fallopian tube to the uterus, and that period is for 7 days, and it is released after 14 days from the ovary. It takes 7 days to reach into the uterus, and the fate of this ovum relies on whether it is get pregnated, get fertilized, or not. If he gets these spermatozoas in the fallopian tubes, then it get pregnant and the pregnancy starts. But if it does not, then it has to go into the uterus in 21 day. But if it get pregnant, then there are hurdles for the life. If there is a no life, no such hurdles. But if there is a life, then there are complications. So complication starts even in the fallopian tubes, and we have already told about that, the fallopian gestations, or extra uterine pregnancy, or tubal gestations. These are different names we give to when the pregnancy could not reach after being fertilized into the uterus, and it starts its development into the fallopian tubes. Why? There were reasons we have told you, that if the size of the fertilized ovum is increased more than 1 million, 1 millimeter, because the orifice, the door between the fallopian tube and the uterus is only of 1 millimeter. Now, the fertilized ovum had 23 pairs of chromosomes, and 23 pairs of the male head sperms. So then they unitedly becomes 46, but ultimately they fuse with each other. When they fuse with each other, then they become 23 again. And out of that, there is a one pair which preserves the characters of the four fathers and the mothers. And ultimately, in this stage, if it starts developing in size, 23 to 46, 46 to 92, means this development of the chromosomes after being fertilized starts to multiply, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, like that. And the time is a limited period. Time is a limited period from ovary to the fallopian tubes. It takes about 2 days, 48 hour max, 24 to, if it's fast, if there is a movement of the broad ligaments are more, if the uterine shuffles are more, it may reach early. But if normal process is going on, it may take from 24 to 48 hours to reach into the fallopian tubes, means 2 days. Max 2 days it takes from the ovary to reach into the fallopian tube. And the same way I have told you already, that after the sexual intercourse, the semen with the spermatozoa is deposited into the vaginal area, and from there, after survival,
survival from the acid in the vagina, survival from the WBC in the vagina, and also the normal quantity of the semen. All these things I have declared, everything step by step. I'm just revising those things so that you must remember all these things, that the quantity of the semen must be 3 to 5 ml. If it's not that, then this deposition of the semen into the vaginal area will not reach to the uh, outer end of the uterus, which is dipping inside the vagina. That is why the quantity is also required. The quantity minimum 3 ml to 5 ml, maybe more. But if it's less, then this is a problem, because the bottom is low and the uterus, which is dumping downward, its cervix does not reach to the semen, and the spermatozoa cannot jump into the uterus. But we are talking about the normal conditions. Under normal conditions, the semen was normal. Under normal conditions, the spermatozoa were active and motile. 80% we need. For the normal pregnancy, we need 80% active and motile spermatozoas for the normal pregnancies. And this is calculated in a different way in the microscopes. When we check the semen, if the 4 to 14 sperms we see in a one microscopic field, that is a normal. And that considered about 120 to 200 millions sperms in one ejaculations. Whereas we know that only one spermatozoa is sufficient to fertilize the one ovum. I don't know why the nature has produced so many spermatozoas in one ejaculations, but there is a reason. There is a reason that the vaginal acidity sperms are matured into alkaline media in the testes. And also, when they pass from the prostatic discharge is mixed into it, which makes the 60% of the semen there, and that becomes alkaline. So, means the survival of the spermatozoa is because of the alkaline media. Whereas, when they are dropped into the vaginal area media is acidic. pH level is more than 8, whereas the spermatozoa semen pH is less than 8. So, under those conditions, most of the spermatozoas die over there, and the remaining out of that are also killed by the WBCs, because WBC is our antibody. And wherever any foreign body comes inside our body from any source, from mouth, from nose, from ears, from eyes, they attack. Even through the skin by injections or pricking, they attack them. They try to kill them. And here, when the spermatozoas are coming into the vaginal area, they are foreign body for the female body. And the female WBCs at that time attack them and they kill them. Try to kill them a maximum. Ultimately, the surviving out of that's why we need that. The 80% active and motile spermatozoas are required if they survive these two attacks. First of all, they were having hurdles problems in the fallopian tubes. They passed the hurdles, came into the uterus, and under these conditions, step by step, this life is facing problems. And here I'm saying before that in the vaginal areas, two attacks these spermatozoa have to bear. First, that is the acidity, the media acidic. Second, the WBCs. And ultimately, even then, they survive some of them. It is known by various experiments that about 200 spermatozoas survive and try to reach into the uterus and reach to the destination. The destination is what? To meet the ovum.
meet the ovum in the fallopian tubes, meet the ovum into the third portion of the fallopian tube, that is known as fimbriated end. Ampullary portion after the fimbriated end. So this condition, he has to bear all these things. That is why the nature produces maximum spermatozoas in one ejaculations, and ultimately they reach. Now, again, I have already told all the, I'm just revising those lectures which I have already delivered in long time. When they reach into the uterus, again, you know, there are two fallopian tubes. Two fallopian tubes are attached to the uterus on both sides, one on each side. And these revolving spermatozoas ultimately are divided into half. Spermatozoa forces are divided into half. If 200 approximately, this is approximate numbers, this is what calculation has been done by the science, that approximately 200 spermatozoas mostly survives and reach into the uterus, and ultimately they are divided in half. Half of the spermatozoas go in one side of the fallopian tubes, half of the spermatozoas goes into the other side of the fallopian tubes. But we know that at one menstrual cycles, in one menstrual cycles, only one ovary is activated, and the other ovary rests in that period and do not produce any ovum. So it means the half spermatozoa, they are going to one fallopian tubes, but they do not met the spermatozoa ovum. They do not met ovum over there. Then what happens? They die over there. That process is also, I have told you, that's known as they are basically in a simple language, if I will tell you, not using the medical terms, that they are dissolved into liquids, or after that they are made part of the excretion of the cells or the wastage of the cells, and are sent back to the bloodstream, which is coming and going from into those cells. Okay. And then ultimately the other side of the half portion of the spermatozoas, which are going to the other side, where this time ovulation has occurred and ova has produced. So means they meet the ovum at their destinations, and it is not that easy that they will enter into the ovum, because the outside layer of the ovum is very hard. It is not easy. Just like you might have seen all the eggs, just like outside you see the eggs, and eggs, the outer shell is very hard, and they cannot reach in that way. Though it is not that hard just to see outside, but even then, that is known as corona radiata. The outer layer of the egg ovum is known as corona radiata, and the sperms are unable to pierce it and enter into the ovum. Ultimately, they die. They die surrounding the ovum, and then they are again dissolved. They are again dissolved into ashes, you can say, into the liquids. And ultimately, this material produces a acidic reaction that they have carried from the vaginal areas. And ultimately, with that, the outer shell of the ovum, that is the corona radiata, the outer layer, dissolved. And when this is dissolved, then the late coming sperm, all sperms are not entering at one time into the fallopian tubes. They are going one after the other in a chain. And half go on the one side, they are died over there. And the other one, they are going to the side where they get the ovum. And then they cover the ovum from surroundings, but they could not enter into it because the outer wall is hard. That is corona radiata.
but ultimately they die over there. And when they die and there is a fermentations, ultimately with that one, the outer layer of the ovum is also dissolved, becomes soft. And when it becomes soft, late coming sperm, the late coming sperm is capable of entering into it. And that is also because that's a very elastic thing. The outer shell is very elastic thing. Even then, the head of the spermatozoa is able to enter into the ovum. The tail remains. You know that the sperm, we have already described about the spermatozoas, what spermatozoas anatomy is. It has head, it has neck, it has the body or the tails. And the head has all the characteristic of his father, all the characteristic of his father, of his forefathers into the head. DNA, that is known as DNA, desoxyribonucleic acid, that contains all the characteristic of their ancestors. And then on the other side, the neck of the spermatozoa has chromatids. That is like our you can say electric meter, or you can the transformers. And that transformer is that which gives energy to the head of the sperm to advance. So these things enter into the spermatozoa and into the ovum, and then the ovum get impregnated. First of all, they remain on two different poles. They remain on two different poles. They do not meet each other. Just like I have given you the examples of two bubbles. You have two bubbles, balloons, you can say. One is a smaller balloon, it has only head of the spermatozoa. The other one is a bigger balloon, that is of the ovum. And then the smaller balloon has entered into the bigger balloon, and then ultimately the bigger balloon overlaps it. It overlaps it. Then the inner wall of both the balloons meet each other and becomes the internal wall, that is known as endoderm. And then the outer wall of this lesser, smaller balloon is also known as the middle room, the middle main, or the middle wall, you can say, the middle portion. And the bigger balloon totally covers the smaller balloon, and the outer wall of the bigger balloon becomes the ectoderm. Ectoderm, mesoderm, endoderm. These three specific layers are formed when ovum meets the spermatozoa. And these are the three important layers I have already told you. They form the structure of our whole body. And I have told you everything. Whatever is visible from outside, whatever is visible from outside, that is formed by the ectodermal layer. Hair, skin, and the glands, mucous membranes, which are visible if you open the mouth, to- tonsils, you can say visibly if you open the mouth. All these things are made up of ectodermal layer, and that layer is only coming from the mother. If anyone has this type of conditions, which is not curing, by all means, we know for any disease, there are causes: exciting cause, maintaining cause, fundamental cause. So all these three causes we know, and as a physician, we try to find out the exciting cause which has excited the disease. If someone is suffering, what are the exciting causes? We should find out and remove that. We don't need anything else to give the medicines. Medicines are given only if
the condition is painful and person is not able to bear that, yes, we need to subside that. And ultimately the exciting factor, just like I have given examples many more times in these lectures, that if you eat curds, if you eat pickles, you say, oh my, I have sore throat, I have a tonsillitis, I have this and that, because of the pickles, because of the sour things. So we find out what excited your disease. That indicates us that these things are the exciting factor of his disease. And then we advise the person not to take these things. And you will not suffer from all these things. But is the second process that we have to increase the resistance, that you should be capable of bearing the effects of these things, which becomes exciting factor for your disease. So that all the time all the people are taking pickles, all the people are taking curds and all that, but they do not suffer it. Why you? Because of son's oversensitivity of the maternal side, because all these things are made up of a ectodermal layer. If you have anything in the skin, if you have anything in the hairs, if you have anything for all those visible outwardly or eye orbits, then all these are coming from the ectodermal layer. And the other thing, I think I have crossed the time limit, but this is the time for the Hindi mediums. So we will turn up into Hindi, and those who want to listen me in the Hindi, they can continue listening these lectures. So हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज, जीवन से जीवन की उत्पत्ति, हाउ द लाइफ इज क्रिएटेड फ्रॉम लाइफ, एंड व्हाट आर द मेन parts of this creating life, that is male and female, and what is the part played by the male and what's the part played by the female. All these things we have discussed in these lectures. And in the last lecture, in Hindi media, we were at that point that the sorry, I'm again going to English. हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवम बच्चेदानी में पहुंच चुका है, और बच्चेदानी में पहुंचने के बाद वहां पर इसकी जो डेवलपमेंट हुई, मैंने आप सब लोगों को बताया कि इसके ऊपर जैसे साइकिल की गरारी होती है ना, जहां पर चेन चढ़ती है, उसके किनारे किंगरे से बने होते हैं, लाइक दैट इसके ऊपर इस तरह के किंगरे से बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाइस। सो कोरियोनिक विलाइस जो हैं, ये इतनी तीखी हो जाती हैं, जैसे ही पहले सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि इसको 1 मिलीमीटर का जो एरिया है, 1 मिलीमीटर का जो सुराख है, फैलोपियन ट्यूब और बच्चेदानी का, इसको क्रॉस करना है। अगर बड़ा हो गया तो क्रॉस नहीं करेगा, फिर वहीं बेचारा रुक जाएगा, जीवन ही वहीं रुक गया। और उसका फेट हमने आपको बता दिया था कि भाई 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने उसके बाद उसको स्पेस ही नहीं है, उसको खुराक ही नहीं है, तो मर जाएगा। और फिर उसको जो है आइसोलेट करना होगा, उसको डिज़ॉल्व करना होगा, या अगर कई बार वो मोल बन के वहाँ लटक जाता है। तो हम यहाँ पहुँच गए कि ये फर्टिलाइज़्ड ओवम 21 डेज़ के बाद बच्चेदानी में पहुँच गया था, और वहाँ पर जाकर इसकी जो कोरियोनिक विलाइज़ थी, वो 2 दिन में इतनी ज़्यादा तीखी हो जाती हैं कि ये वो जो अंदर का लेयर बना है बच्चेदानी का, उसको हम लोग सब पहले इंडोमेट्री लेयर बोलते हैं। बच्चेदानी के 3 लेयर होते हैं। एक बाहर का लेयर होता है कवरिंग, जिसको हम ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं, मेम्ब्रेन। एक अंदर का लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है बच्चेदानी का, मायोमेट्री में। और मायोमेट्री के अंदर का जो लेयर है, वो लेयर हर महीने नया बनता है, हर मासिक साइकिल में नया बनता है, और हर मासिक साइकिल के दौरान ये बह जाता है।
इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ये फर्टिलाइज्ड ओवम बच्चेदानी में पहुंचा, इसके ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो गए, जिसको हमने ये कहा कोरियोनिक विलाइस। और उसके बाद ये कोरियोनिक विलाइस इतनी तीखी हो गई कि वो जो अंदर का सॉफ्ट लेयर था, वो उसमें खुब गई, वहां पर एंकर हो गया वो। और जैसे बाहर कुकड़ी को आपने देखा ना कि अंडों को चोंच मार मार कर तोड़ती है और उसके बाद वहां से बच्चा निकलता है। ओके, इसको बोलते हैं हैचिंग। वो हैचिंग वाला प्रोसेस यहाँ पर होता है। और इस हैचिंग वाले प्रोसेस से क्या होता है कि भाई ये जो कोरियोन विलाइज हैं, इसकी चोंच लगने से जो अंदर का लेयर है उसमें सुराख होता है, वहां से ये खून सक करना शुरू कर देती है। खून सक करना शुरू कर देती हैं, तो नीचे का जो पोर्शन होता है ना, उसमें प्लेसेंटा तैयार होता है। कैसे तैयार होता है प्लेसेंटा? उसकी मैंने पंजाबी में, हिंदी में, सब में एग्ज़ाम्पल आप लोगों को ईज़ी एग्ज़ाम्पल दी है कि आप नल बोर करते हो ना, ट्यूबवेल बोर करते हो ना, तो सबसे पहले जब ट्यूबवेल बोर करते हैं, फ़िल्टर नीचे जाता है, तो उसमें से निकल कर मिट्टी, रेत, पानी सब मिक्स होकर निकल आता है। और आस्ता-आस्ता उसको चलाते रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि चारों ओर जहाँ वो डिप किया हमने फ़िल्टर, जहाँ ये कोरियोनिक विलय गई थी, वहाँ पर चारों ओर का जो इस तरह का सॉफ्ट मटेरियल था, रेत थी, मिट्टी थी, तो यहाँ क्या था? स्पंजी लेयर था। पीछे माँ के बच्चेदानी का मसल लेयर था जिसको मायोमेट्री हम बोलता। आगे ये एंडोमेट्रियल लेयर था। बीच में स्पंजी लेयर था और स्पंजी लेयर था खून को कैरी करने के लिए। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें शहद रहता है ना, इसी तरह ये इस तरह का होता है जिसमें खून आकर महीने भर में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा और होता रहता है कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो उसकी खुराक बनेगी, उसको वेलकम करेंगे, उसकी खुराक बनेगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये इतना ज़्यादा भर जाता है कि बाहर वाला लेयर इतना सॉफ्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है। क्यों फटता है वो मैंने आप सब लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हार्मोनल इफ़ेक्ट है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का और एलएच हार्मोन का इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्वाइलिंग होती हैं, रगड़ खाती हैं, मूवमेंट हो ही रही है जिसको यूट्राइन सफल हमने बोला था, जिसकी वजह से ये फट जाता है और ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। पर हम बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइज्ड हो गया ओवम, नया जीवन शुरू हो गया है और नया जीवन शुरू होने के बाद बच्चेदानी में आकर लग गया है। और लगने के बाद क्या हुआ कि अंदर से, बाहर का लेयर था पीछे का मायोमेट्रियम, अंदर का लेयर था इंडोमेट्रियम, बीच का लेयर था स्पंजी जिसमें खून भरा हुआ था। और उसमें स्पंजी लेयर को इसने चूसना शुरू किया, खून चूसना शुरू किया, इसके साथ उसके पार्टिकल भी आ गए। जब इसके पार्टिकल भी आ गए तो वही बच्चे के शरीर में जो वो डेवलप हो रहा था, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं हम। एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा था, उसके अंदर गया सारा कुछ। उससे फिर जो उसने लेना था ले लिया, लेकिन उसका जो वेस्ट है, जैसे हमारी आर्टरी वेन्स है ना, आर्टरी में फ्रेश खून दिल से जाता है, एक-एक सेल तक पहुँचता है और उस वहाँ से फिर उस सेल का गार्बेज इकट्ठा करता है। सभी ट्रिलियन सेल है हमारी बॉडी में और ट्रिलियन ही ऐसे लिंक हैं जिसको हम वेनस लिंक बोलते हैं और वेन्स जो हैं वो पर उसको इकट्ठा कर लेती हैं। जब उसको इकट्ठा कर लेती हैं तो वो वापस भेजती हैं। मीन सेल का गार्बेज प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड उसने इस्तेमाल कर लिया, जो उसमें बाकी बचा था, प्लाज्मा भी था और भी बहुत कुछ था, वो वापस आ रहा है। उसमें सेल का गार्बेज भी आ रहा है। तो क्या हुआ, वो वो जो एम्ब्रियो था, उसने माँ से खून लिया, प्लेसेंटा से खून लिया और जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके ज़रिए इसके तक पहुँचा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे बनती है, मैं हम बता चुके हैं आपको, अमनियोटिक लेयर से कैसे बनती है, क्योंकि लंबा लेक्चर था ना, तो मैं सिर्फ़ सम अप कर रहा हूँ इन चीज़ों को अभी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बनने का पूरा जो सर्वे था वो मैंने आपको बता दिया था और नीचे प्लेसेंटा बनने की जो बात है वो अभी मैंने बताई, वो रिपीट कर रहे हैं हम। तो क्या हुआ कि जो गार्बेज इस माँ की तरफ से भी गया था बच्चे के अंदर, वो गार्बेज भी
बच्चे का गार्बेज भी, वो बनकर फिर वापस माँ के पास आया और फिर जब माँ के पास वापस आया, तो वो माँ उसको एक्सेप्ट नहीं करती। माँ उस टॉक्सिन को मान लीजिए किसी आप हमारे हाथ में कहीं कोई फोड़ा हो गया, घाव हो गया, कैंसर हो गया, कुछ हो गया, वहाँ से जो खून जाएगा, वापस शरीर में जाएगा, उसको शरीर बर्दाश्त नहीं करता। हमें क्यों तकलीफ़ें होती हैं? हमें क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं? कि हमारा शरीर उस आए हुए टॉक्सिन को जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसीलिए जैसे ही माँ के प्लेसेंटा से ये जो मिडल वाला लेयर था, स्पंजी लेयर था, इसके खून के साथ बच्चे में गया, बच्चे से फिर उसका भी गार्बेज लेकर वापस आया, माँ उसे बर्दाश्त नहीं करती। और अमूमन इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने, पहले महीने तो माँ को ही नहीं पता चलता कई बार। कुछ सेंसिटिव बच्चियाँ हैं, जिनको ये पता चल जाता है कि मैं ऐसे लगता है कि कुछ दिन ऊपर हो गए, तभी पता चलता है कुछ दिन ऊपर हो गए। हालाँकि ये उससे पहले जो 14 दिन पहले ये सारी कार्रवाई हो चुकी है। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं, जो प्रेग्नेंसी होने के नेक्स्ट डे ही सेंसिटिविटी में बता सकती है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा पल्स रेट में फ़र्क आ गया है, मेरी बॉडी की हीट में फ़र्क आ गया है, मेरे मन में थिंकिंग में फ़र्क आ गया है। ये सेंसिटिविटी चेंजेज़ होती है उसी वक़्त जब ओवम फर्टिलाइज़्ड होता है, जब स्पर्म उसमें एंटर होता है, तभी से ये शुरू हो जाती है। तो ख़ैर हम ये कर रहे हैं कि आम तौर पे ज़्यादातर बच्चियों को ये पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो गई है कि नहीं होगी। पहले महीने तो ऐसे ही चलता है। दूसरे महीने तक ये सारा गार्बेज वापसी आना-जाना शुरू हो गया, जो माँ बर्दाश्त नहीं करती, तो उस वक़्त फिर माँ को उल्टियाँ आती हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी के दौरान सुबह-सुबह खाली पेट माँ को जो उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। और कारण क्या हुआ कि वो जो मिडल वाला लेयर चूस कर, जैसे हमने पंप लगाया था तो गार्बेज, रेता, मिट्टी सब निकल कर बाहर आ गए थे और नीचे एक हौज बन गया था। उस हौज के चारों ओर सख्त चीज़ें रह गई जो खुर नहीं पाई, जो नहीं घुल पाई उसमें, वो चीज़ें रह गई थी तो वो एक हौज बन गया, किनारे सख्त हो गए उसके और उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के बढ़ने के अगले महीने नेक्स्ट मंथ औरतों को आम तौर पे ये उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जो ये एक पॉज़िटिव इंडिकेशन है। एक और पॉज़िटिव इंडिकेशन है जो मैंने आप सब लोगों को बताई थी कि टेस्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि 23rd डे जब ये फर्टिलाइज़्ड ओवम बच्चेदानी में आकर सेट होता है, तो कितना दिन है 23rd। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन से काउंट करें, 23rd डे है। पर वो बच्ची तो ये समझ रही है, वो औरत तो ये समझ रही है कि अभी मेरा महीना आने में 1 हफ्ता बाकी है। लेकिन अगर उसको इस समय में स्पॉटिंग होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। कि कोरियोनिक विलाइज जैसे ही खुरदरी होकर उसमें फिट होनी शुरू होती हैं, उस वक़्त कुछ ब्लड लीक कर जाता है। अगर ब्लड की कंपोज़िशन में कोई कमी रह जाती है तो, सभी को नहीं। और वो जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग उसमें होती है, वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग के तौर पर महीना आने के 1 हफ्ता पहले 5 से 7 दिन पहले अगर किसी को स्पॉटिंग होती है और उसका गृहस्थ जीवन नॉर्मल चल रहा है, तो ये एक पॉज़िटिव साइन है प्रेगनेंसी का कि भाई वो जो कोरियोनिक विलाइज़ थी, वो माँ के पेट में अंदर लेयर में एडजस्ट हो रही है और जिसकी वजह से वहाँ से थोड़ा ब्लड लीक हो गया है। और कुछ बच्चियों को ऐसा होता है कि ये स्पॉटिंग जो है थ्रू आउट 6वें-7वें महीने तक भी चलती रहती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि माँ के शरीर में, हालाँकि आजकल तो एंटीनेटल क्लिनिक्स इतनी बनी हुई हैं कि डॉक्टर जाते हैं, चेक करते हैं, खून चेक करते हैं, पेशाब चेक करते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या ब्लड की कंपोज़िशन नॉर्मल है और इसमें जितना भी साल्ट है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, पूरा है, आयरन पूरा है। अगर नहीं है पूरा, तो हम समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कैल्शियम के साथ
ऑक्सीजन अगर मिलेगी, तो वो क्लॉट बनाएगी जिसको हम फाइब्रिन बोलते हैं। और फाइब्रिन का मतलब है जमा कर। बाहर भी चोट लग जाती है ना, तो खून के बहने का एक लिमिट टाइम है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। और उस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के हिसाब से उसको क्लॉट हो जाना चाहिए कि एक बार स्पॉट लगा, ज़ख्म हुआ, चाकू लग गया था, ज़ख्म हुआ, अब वो ठीक हो गया। लेकिन जिन बच्चियों को कोई कमी पेशी है उनके ब्लड में या इस तरह की कोई चीज़ है, जो शरीर में उनका अपना ही पूरा नहीं है, फाइब्रिन बनने वाली जो कंडीशन है, कैल्शियम नहीं पूरा है, पोटेशियम नहीं पूरा है, आयरन नहीं पूरा है, विटामिन सी नहीं पूरा है, विटामिन के नहीं पूरा है, उन बच्चियों को कई बार 6-7 महीने तक ब्लीडिंग होती रहती है, स्पॉटिंग होती रहती है। और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि भाई इसके शरीर में कोई कमी पेशी है जिसके लिए डॉक्टर फिर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि भई ये चीज़ लो ताकि आपके अंदर की कमी पूरी हो जाए। दूसरी बात यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जो सेट हो गया, इससे ये खून निकलना शुरू हुआ। यहाँ पर 2 और बहुत सी अचंभित घटनाएँ घटती हैं। बहुत अचंभे वाली चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? एक तो जो प्लेसेंटा है ना, नीचे जिसको हम ऑल बोलते हैं, प्लेसेंटा बन गया, हौज बन गया यानी एक, हौज बन गया, उसके चारों ओर मांसपेशी की दीवार आ गई और उसमें खून इकट्ठा होना शुरू हो गया। और ये खून इकट्ठा होना इस तरह का होता है, बड़ी अजीब है रचना कुदरत की। आपने कभी समुद्र के किनारे में किसी जगह जाकर या सुना होगा आपने कि समुद्र में कई जगह पानी हरे रंग का है, कई जगह नीले रंग का है, कई जगह व्हाइट है। पानी का कलर लेकिन दीवार तो नहीं है ना आप उसमें। समुद्र में दीवार तो नहीं होती, लेकिन समुद्र एक ही चीज़ है और उसमें पानी अलग-अलग है। और या ठीक है, वो लाइट का रिफ्रेक्शन का जो प्रिज़्म का सिस्टम है उसको छोड़ दें। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि प्लेसेंटा में ऐसा क्यों होता है? वो तो रेज़ के कारण होता है ना। रेज़ के रिफ्रैक्शन की वज़ह से होता है। लेकिन प्लेसेंटा में और जिसको हमने बोला, उसमें एक तो माँ की तरफ से खून जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें खुराक भी है, बच्चे को जा रही है। दूसरा, बच्चे से वापस खून आ रहा है और उसमें खून में खुराक कम है, ऑक्सीजन भी कम है, जो चूसना था चूस लिया बच्चे ने, बाकी उसने उसमें भेज दिया। तो मतलब वो खून आम तौर पे वेन्स में जो खून होता है ना, जो हमारे शरीर में दिखाई नीली-नीली नाड़ियाँ देती हैं, वेन्स जिसको बोलते हैं, ये इसमें खून जो होता है, वो लाल नहीं होता। और आर्टरी का जो दिल से सीधा खून लेकर जा रही हैं, जिनको जीटी रोड हम बोलते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, वो खून बिल्कुल लाल होता है। और इसी तरह जो माँ से आने वाला खून है, वो लाल होता है और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और बच्चे से जो वापस आ रहा है खून उसमें ऑक्सीजन कम होती है, नाइट्रोजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैसेस जितनी भी है ना, ये डेंसिटी में हल्की है, भारी नहीं है। ऑक्सीजन भारी है वज़न में। तो नीचे वाला पोर्शन जो है, वो प्लेसेंटा का 2 हिस्से उसके हो जाते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो लाल रंग का होता है, थोड़ा-सा ब्राउनिश कलर में रहता है। और जो माँ बच्चे से वापस खून आ रहा है, वो जो है थोड़ा-सा स्काई ब्लू कलर का रहता है। तो प्लेसेंटा में बिना दीवार के ये एक डिवीज़न रहती है, एक तो ये बात मैंने कहनी चाहती थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्लेसेंटा जो है ना, इटसेल्फ एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह का काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में इस तरह के ग्लैंड हैं, जो अलग-अलग शरीर में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है, एड्रेनालिन ग्लैंड है, पैंक्रियाज़ बहुत से ऐसे ग्लैंड हैं, जिनका शरीर में अलग-अलग जगह सेंटर बना हुआ है, लेकिन उनका आपस में लिंक नहीं है। उनका आपस में जैसे मुँह है ना, मुँह का टट्टी वाले रास्ते से लिंक है, शुरू से लेकर आखिर तक है। नाक है ना, नाक का फेफड़ों से या फेफड़ों का नाक से सीधा लिंक है। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का किसी के साथ कोई लिंक है नहीं। लेकिन फिर भी ये जो काम करते हैं, वो सभी जगह वैसा ही है।
क्या करते हैं कि हमारे घर में आपने खीर बनाई और मेरे घर में खीर आपने भेज दी, और जिस कौली में आपने खीर मुझे भेजी, उसी कौली में हमने कढ़ी बनाई थी, वो आपको भेज दी। तो क्या होता है, खून हर एक सेल में जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में खून गया, और खून जाने की वजह से जो उसके पास था, वो उसने रख लिया, और जो इसके पास था, उसी खून में उसको वापस भेज दिया। वो सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, तो जिसको जो चाहिए वो ले लेता है। अब हार्मोन हैं, सभी हार्मोन को सभी जगह ज़रूरत नहीं है ना। तो जिन हार्मोन की जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे सब्ज़ी बेचने वाला आता है ना, तो वो उसके पास तो सभी तरह की सब्ज़ियाँ हैं। लेकिन आपको तो भिंडी चाहिए, आप तो भिंडी लेंगे, दूसरी तो नहीं ना लेंगे, कद्दू नहीं लेंगे। इसी तरह ही जिस अंग को कोई चीज़ चाहिए, वो ब्लड में सर्कुलेट कर रही है, वो वहाँ से ले लेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो प्लेसेंटे की बात हम कर रहे हैं ना भाई, ये प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो फिर इसका मतलब है कि ये भी कुछ ऐसा बनाता है, एक तो खून रखता ही है, खून भेजता ही है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये एक प्रोजेस्टेरोन पैदा करता है। प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन पैदा करता है, जिसको प्रेगनेंसी को कॉम्पैक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है। कई बार बच्चियों को खून वगैरह आता है या भार वगैरह होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाओ। प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन दो ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, कि प्लेसेंटा इतना प्रोजेस्टेरोन बना नहीं रहा, तो उसको ज़रूरत होती है। दूसरी बात, ये जो कोरियोनिक विलाइज थी नहीं, जै मैं जो जो वो गरारी के किंगरे बने हुए थे, जिससे ये खुप गया था उस अंदर वाले लेयर में, उसको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करना शुरू कर देता है। एक आदमी था, फौज में भर्ती हो गया, अब फौजी की तरह बिहेव कर रहा है। एक आदमी था, नॉर्मल था घर में, और कोई पुलिस वाला बन गया था, वो पुलिस वाली ड्यूटी वो कर रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ आकर ये जो कोरियोनिक विलेज थी ना, इन्होंने भी अपना एक काम शुरू कर दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बनाना, एक हार्मोन बनाना शुरू कर दिया, और उस हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन। कोरियोनिक विलाई इसका नाम है, और ह्यूमन HCH, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, ये बनाना शुरू कर देता है। और इसका पर्पस क्या है? ये भी पूरे सर्कुलेट करता है ब्लड में, और जब ये कोरियोनिक हार्मोन ओवरी के पास पहुंचता है, तो ओवरी को एक सिग्नल मिलता है कि भाई, वो जो हमने ओवम भेजा था ना पहले, आज से 3 हफ्ते पहले मैंने एक ओवम भेजा था, एक लड़की की शादी करके भेजा था, वो ससुराल में गई, वो वहाँ पर सेट हो गई। अब सेट हो गई है, तो फिर उसको दाज चाहिए, फिर चाहिए कि और जो भी देना है। तो जो बाकी जहाँ से ओवम निकल कर आया था ना, उसका खोल बाकी जो बच गया था, खोल ही कहें आप उसको, उसका नाम हो जाता है कार्पस लूटियम। और वो जो कार्पस लूटियम है ना, वो भी प्रोजेस्टेरोन बनाता है। और प्रोजेस्टेरोन का काम मैंने आपको बता दिया कि ये बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दाज की तरह है। और ससुराल वाले भी तो सोचते हैं ना, मैं लड़का शादी किया है, लड़की को लेकर आया है, अब ये दोनों सेट हो जाएं। इसीलिए प्लेसेंटा भी वही काम करता है। प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन बनाता है। कार्पस लूटियम जो ओवरी का बाकी बचा हुआ था हिस्सा, वो भी प्रोजेस्टेरोन बनाता है। और ये जो कोरियोनिक हार्मोन था, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन था, जब ये सर्कुलेट करके ओवरी के पास पहुंचा, तो उसको ये सिग्नल मिल गया कि भाई, ये हार्मोन तो तभी होना था जब हमारी बच्ची वहां ससुराल में सेट हो जाएगी। ये हार्मोन को निकलना ही तभी था कि ये जो फर्टी ओम गया था, ये फर्टिलाइज हो गया और बच्चेदानी में सेट हो गया, अब इसका जीवन शुरू हो गया है। ये उसके लिए सिग्नल है। और उस सिग्नल के हिसाब से उसको ये एक और दूसरा इशारा भी है कि अब तुम नए प्रोसेस को बंद कर दो,
क्योंकि ओवरी का काम है कि एक बार ओवम निकल गया, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ, अगले महीने फिर नई तैयारी करनी है कि उसका जो जर्मिनल लेयर है, जो उसकी दीवार है बाहर की, उससे फिर पनीरी उगनी है। जैसे धान की पनीरी होती है ना, फिर उसी तरह पनीरी उगनी है और उस पनीरी में उसको हम oocyte बोलते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, उससे oocyte पनीरी उगी। पनीरी इटसेल्फ एक हार्मोन पैदा करना शुरू कर देती है और जिसको ईस्ट्रोजन हार्मोन हम बोलते हैं। और इसका दूसरा काम ये होता है कि इससे आगे डेवलप होता है ओवम। जो ओवम 14 दिन बाद निकल कर फिर अपनी जिंदगी देखना चाहता है कि मेरी जिंदगी का फेट क्या है, फेलोपियन ट्यूब में दाखिल होता है। तो अब उसको सिग्नल ये पहुंचा, ह्यूमन जो कोरियोनिक हार्मोन था, ये जब उसके पास पहुंचा तो उसको ये सिग्नल मिला कि अब नया ओवम बनाना बंद कर दो। वैसे तो हमने बोला कि 1 महीने में 1 ओवरी ओवम पैदा करती है, दूसरे महीने में दूसरी ओवम पैदा करती है। 1 महीने 1 ओवरी रेस्ट करती है, 1 महीने दूसरी ओवरी रेस्ट करती है। ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब क्या है, अब दोनों को साइलेंट कर दिया। अब दोनों को सिग्नल पहुंच गया कि दोनों की जगह ही तो पहुंच गया ना, जो कोरियोनिक हार्मोन है। भाई तुम अपना काम अब बंद कर दो, तुम स्लीप में चले जाओ, लेटेंट स्लीप में चले जाओ। अब तुम्हारा काम बंद है। पर ये जो जिस ओवरी से ये निकला था ना, ओवम, वो कार्पस लूटियम, वो प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करता है कि ये दाज के तौर पर जाता रहे, वहां पर ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाए और वो वहां पर सेट हो जाए। सो ये साधारण तरीके से मैंने आप सब लोगों को समझाया कि बच्चेदानी में बच्चा सेट कैसे होता है। दूसरी बात मैंने आपको अभी कुछ मिनट बाकी हैं इस प्रोग्राम के, और वो मैंने आपको बताया कि जो ऑल से अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। मैंने आपको कहा कि 2 बबल्स थे, एक ओवम का बबल था, बैलून कह लें, एक स्पर्म के हेड का बबल था, बैलून था। वो आपस में फ्यूज हो गए। बड़े बबल ने, बड़े बैलून ने छोटे बैलून को अपने अंदर कब्जे कर लिया। लेकिन दोनों की दीवारों में एक जगह एक बच गई, जहां दोनों आपस में मिले थे, वो एक जगह बच गई। वो एमनियोटिक डिस्क बन गई, उसको डिस्क बोलते हैं। वो डिस्क वाला जो एरिया है ना, वहां से एक लूप निकलता है जो बाहर आता है, कोरियोनिक विलाइस के साथ जाता है। तो कोरियोनिक विलाइस के जरिए ये अम्बिलाइकल कॉर्ड बनाता है। अब ये जो अम्बिलाइकल कॉर्ड बनती है ना, जिसको नाड़ू बोलते हैं हम लोग, ये नाड़ू में वेन एक होती है, आर्टरीज 2 होती है। अब जो नए प्रोग्राम ये सुन रहे हैं, उन सब की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में जितना फ्रेश खून दिल से जाता है, पूरे सेलों को जाता है ना, उसको हम बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी किस तरह की होती है? जैसे जीटी रोड होती है, ग्रैंड ट्रंक रोड, हाईवे, जहाँ ऐसे हम हाईवे बोलते हैं। हाईवे होता है, उसमें कोई लाइट नहीं होती। सीधे उसको स्पीड में जाते रहो, गाड़ी जो स्पीड है उसकी उसके मुताबिक जाते रहो। दिल से चलकर आखिरी टिप ऑफ द फिंगर तक खून पहुंचता है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो वेन्स होती है ना, वेन्स होती हैं स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट रोड्स। स्ट्रीट रोड में क्या होता है? थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट, थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट, रुकावट, स्पीड ब्रेकर, ये सब होता रहता है। तो जो वेन्स हैं, जो खून वापस लेकर आ रही हैं सेलों से, उन सब में स्पीड ब्रेकर होती है, जिसको हम बोलते हैं वाल्व्स। वाल्व लगे होते हैं। वाल्व की एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे नलका होता है ना, हम नल बोर करते हैं ना, अगर बोकी उसकी जो होती है, वो अगर लीक कर जाए, तो फिर नल चलाते हैं तो पानी नीचे लीक होता रहता है, और बोकी सही हो तो पूरा पानी बाहर आ जाता है, और इस तरह नल पानी बाहर फेंकता रहता है। ये जो वेन है, टांगों में है, पैरों में है, हाथों में है, और इसको पूरे को दिल तक पहुंचाना है, तो अगर इसने पंप किया
प्रेशर मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि दिल का तो चलने का ट्रांसफार्मर अलग है। उसको हम बोलते हैं, उसकी बात भी बाद में करेंगे। एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिज, 3 तरह के ट्रांसफार्मर हैं दिल में लगे हुए, जो दिल को बिजली देते हैं कि चल भई, ऐसे पंप करता रहे। लेकिन जो वापसी वाला खून आता है ना, वो हमारी मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्ट करने से चलता है। मांसपेशियाँ कॉन्टैक्ट करती हैं, हाथ, उँगलियाँ, हम जो लोग बिल्कुल बिस्तर पर पए होते हैं ना, उनका नम होना शुरू हो जाता है। सुस्ती, जैसे हाथ सो गया जी, मेरा पैर सो गया है जी, क्या होता है कि वो सर्कुलेशन जो वापस आ रहा है, वो रुक गया है, जा नहीं रहा है। और नीचे उसके जो नर्व थी, सेंसरी नर्व्स का, कुछ जैसे टेलीफ़ोन की लाइनें होती हैं ना हमारी, और उसमें 2 तरह की तारें होती हैं। एक से आप मेरी बात सुन रहे हो, एक से मैं आपकी सुन रहा हूँ। इसी तरह की 2 तारें होती हैं नर्वस सिस्टम में जो जाती हैं, सेंसरी एंड लोकोमोटरी। वो तारें इस खून के इकट्ठे होने से प्रेस हो गई हैं, सूचना नहीं दे रही, आगे ब्रेन को सूचना नहीं पहुँचा रही हैं। तो हम बोलते हैं मेरा हाथ सो गया। मेरा पाँव पाँव सो गया। उसकी वजह से ये ऐसा होना शुरू हो जाता है, जिसके बारे में तो मैं वेन की बात कर रहा था कि जो वेन्स हैं, इसमें वाल्व लगे होते हैं, और जैसे-जैसे वो चलती हैं, कॉन्टैक्ट होती रहती हैं, वैसे-वैसे खून आगे प्रेस होता रहता है। नहीं तो पाँव में इकट्ठा हो जाए, नहीं तो हाथों में इकट्ठा हो जाए। क्योंकि जो नीचे वाले पोर्शन हैं, उनमें ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। होता है, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोज़ वेन्स। कई लोगों के हाथ सूज जाते हैं, कई लोग के पाँव बहुत जल्दी सूज जाते हैं, और जो टाँगें फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, या क किसी की टाँगों में जो नीली-नीली वेन्स जो है बाहर आ जाती हैं, जिसको स्पाइडर वेन्स बोलते हैं, वेरिकोज़ वेन्स मेडिकल टर्म में बोलते हैं। ये सब होनी शुरू हो जाती है, और इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे जो मेन ट्रंक है ना, सफ़ेद वाली वेन उसको बोलते हैं। वेन ट्रंक है ना, उसमें वाल्व बंद हो गए हैं। समय के साथ चर्बी जम गई है, समय के साथ कुछ ऐसा हो गया है, जिसकी वजह से वो जब हम नलका गेरते हैं तो ऊपर पानी जाता है तो नीचे लीक कर जाता है। वो जो वाल्व हैं, वो उसके ऊपर चर्बी जम गई है और नीचे हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरा खून ऊपर को वापसी में जा नहीं रहा, और आपकी टाँग में नीली-नीली नाड़ियाँ फूल गई हैं, जिसको वेरिकोज़ वेन्स हम बोलते हैं। तो मैं ये प्लेसेंटा की बात कर रहा था और ऑल की बात कर रहा था। ऑल जो होती है, इसमें एक वेन मैंने कहा होती है, और एक और तब्दीली कुदरत ने यहाँ पर आकर कर दी। जैसे कहें कि मेडिकल साइंस ने इसको समझने के लिए तब्दील कर दिया कि जो ऑल है ना, ऑल में वेन 1 है, आर्टरी 2 हैं। क्यों? वेन का एक तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें ब्रेकेज है, कि एकदम प्रेशर से सारी सीधी चीज़ ना जाए। कारण ये है कि माँ को ब्लड प्रेशर हो गया, माँ को कोई प्रॉब्लम हो गई, माँ का जो खून का थ्रेशहोल्ड है, वो ज़्यादा हो गया। अगर वो ज़्यादा हो गया, तो उस हालात में ऐसा ना हो कि सॉफ्ट जो बच्चा बेचारा है, उसका नाड़ियाँ फट जाएँ, उसको कोई नुकसान हो जाए। इसलिए कुदरत ने यहाँ पर जो माँ से खून बच्चे को आने वाली चीज़ है, इसको वेन की तरह बनाया है। आर्टरी की तरह नहीं बनाया है। जैसे दिल से लेकर खून ले जाने वाली है, फ्रेश खून आर्टरी होती हैं, यहाँ पर माँ से ही आना है सारा कुछ। दिल वाला काम भी माँ ने करना है। तो इसलिए वो जो उसने कुदरत ने बनाया, इसको वेन बनाया कि भई नहीं, रुक के चले। ऐसा ना हो कि माँ को तो ब्लड प्रेशर बहुत हो गया है, और इतने प्रेशर से माँ का खून जाएगा तो बच्चे का तो अंग ही फट जाएँगे अंदर से, सॉफ्ट है बेचारे। इसलिए कुदरत ने इसको वेन बनाया। दूसरी एक और बात की कुदरत ने, जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसको नाड़ू हम बोलते हैं, इसमें एक वेन है, आर्टरी 2 लगा दी। नहीं तो पूरे शरीर में ऐसा है कि एक आर्टरी के साथ एक वेन होती है, एक वेन के साथ एक आर्टरी होती है, एक आर्टरी और वेन के साथ एक नर्वस सिस्टम होता है, एक आर्टरी और वेन के साथ एक लिम्फ चैनल होता है। एक रूटीन है नेचर का, जैसे-जैसे कुदरत ने बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ उसने क्या किया कि वेन तो एक लगाई, जो माँ से खून लेकर बच्चे को दे रही है, खुराक दे रही है, और बच्चे से जो वापस आने वाली चीज़ें हैं, उसके 2 कर दी, आर्टरी बना दी।
कि कहीं ऐसा ना हो कि बार-बार माँ की तरफ से ज़्यादा खून बच्चे को जाए और बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। कई बार डेड बर्थ हो जाते हैं या थ्रेटेड अबॉर्शन हो जाते हैं 3 महीने के बाद ही, 4 महीने के बाद ही या 2 महीने के बाद ही अबॉर्शन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो वो इसी कारण होते हैं कि माँओं का कोई न कोई नुक्स ऐसा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को जाने वाला जो खून है, वो इस तरह वो प्रेशर बच्चा बर्दाश्त नहीं करता। तो उस हालात को बचाने के लिए कुदरत ने वेन का लगाया और वापसी कि कहीं ऐसा ना हो, अगर ज़्यादा खून चले ही गया है बच्चे को, तो फिर उसको जल्दी-जल्दी खाली कर दिया जाए ताकि बच्चे को ज़्यादा खून ना रह जाए, उसका अंग जो है काम करना बंद ना कर दें। तो इसकी वजह से उसने 2 आर्टरी लगा दी और आर्टरी का तो आपको पता है कि भई उसमें जीटी रोड है, उसमें कोई रुकावट है नहीं कि खाली करना है तो फटाफट उसको कर दो। और जब आना है तो ठीक आ जाए भाई, आ जाए जितनी ज़रूरत है उतनी ही आ जाए। अगर ज़्यादा ज़रूरत आएगा तो उसको फटाफट खाली करने के लिए कुदरत ने प्रबंध बना दिया कि साडा जो नाड़ू होता है जिसको हम नाड़ू काटते हैं बच्चे को डिलीवर होने के बाद, उसमें 2 आर्टरीज़ होती हैं, 1 वेन होती है। ऐसा क्यों लगाया कुदरत ने वो मैंने आपको बता दिया। प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन क्यों पैदा करता है वो मैंने आपको बता दिया। प्लेसेंटा में खून का रंग 2 तरह का होता है, दीवार नहीं होती। कोई बीच में दीवार नहीं है, लेकिन रंग 2 तरह का है। क्यों है? ये मैंने आप सब लोगों को बता दिया। कोरियोनविलाइस जो हैं, वो एक हार्मोन पैदा करती हैं, एक पीछे सिग्नल भेजती हैं कि मैं सेट हो गई हूँ या सेट हो गया हूँ, अब भई आगे का काम जो पीछे वो बंद कर दें और वो पीछे का काम बंद हो जाता है। सो जो ओवरी में होना था और बच्चेदानी को तो इन्वॉल्व उसने कर ही लिया होता है। सो भई इसके आगे का जो संक्षेप है, क्योंकि मैंने काफ़ी समा आगे ले लिया हिंदी में, पंजाबी का लेक्चर का हमारा टाइम है और पंजाबी के लेक्चर में हम क्या करते हैं क्योंकि हिंदी समझने वाले पंजाबी समझते हैं, पंजाबी समझने वाले हिंदी भी समझते हैं। तो मैं इससे आगे चलता हूँ कि भाई पंजाबी के लेक्चर में सो पंजाबी मीडिया ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1996 ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੋਂ ਲੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਮਈ 7 ਦੋ 1997 ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੋ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹੋਵੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜੀਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਉਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਥਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸੋਹਣੀ ਬਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਯਾਮ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ। ਔਰ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਿਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਪਰਮ ਤੇ ਓਵਮ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਨ ਹੁਣ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਸਾਈਨ 6ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ-8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਕੋਰੀਆ ਟਾਈਪ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਵਰਿੰਗ ਸਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਮੈਟਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸੀਡੂਆ ਬੇਸਾਲਿਸ। ਇਸ ਹੁਣ ਇੰਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਭੂਆ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੈਸੀਡੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਡੈਸੀਡੂਆ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। 3 ਹਿੱਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 3 ਹਿੱਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਡੈਸੀਡੂਆ ਦੇ 3 ਨਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਸੀਡੂਆ ਬੇਸਾਲਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਖੁੱਭਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਡੂਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੈਸੀਡੂਆ 3 ਹਿੱਸੇ, 3 ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਡੈਸੀਡੂਆ ਬੇਸਾਲਿਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਡੈਸੀਡੂਆ ਬਚਿਆ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫੜ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਡੈਸੀਡੂਆ ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਚ, 1.5 ਇੰਚ, 2 ਇੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਲਾਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬੇਰ ਵਾਂਗੂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ। ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਕੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਡੂਆ ਹੋਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ। ਸੋ ਡੈਸੀਡੂਆ ਬੇਸਾਲਿਸ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ, ਕੈਪਸੂਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ ਆ ਤੇ ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਕਸ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਜੈਲੀ ਜਿਹੀ, ਝਿੱਲੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਰਮਲ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨੁੱਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਕਸ ਡਿਸਚਾਰਜ 6ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਨੇਟਰਮ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡੈਸੀਡੂਆ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਬੇਸਾਲਿਸ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਾਸਟ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸਸ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਲਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬੋਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੰਦ ਪਰੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਗੰਦ ਪਰੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਖੂਨ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਗਰਭ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਓ, ਨਾ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੇਸਿਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ, RH ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰ ਐਮਿਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ। ਹਾਈਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਈਪਰ
ਐਮਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਐਮਿਸ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਈਪਰ ਐਮਿਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ, ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ 12 ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ, 3 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 16 ਵੀਕ, 16 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਭਈ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਬੜੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨੈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਬਸਟੈਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕ ਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਾਲਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4086871899।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 4:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਵੀ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਥਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ।